दशकम् 61 विप्रपत्नी अनुग्रह तजच्छ बृन्दावनतोधिदोरधो वनं कदस्त्वं खलु गोपगोकुलै हृन्दन्द्रे भक्तरद्विजाङ्गना कदम्बाकानुग्रहरणरम्बहन् तदच्च बृन्दावनदोतिदूरदो वनं कदोत्वं खलु गोपगोकुलै हृदन्दरे भक्तरद्विजाङ्गन कदम्बकानुग्रहणक्रमाहनं तदो निरीक्षाय चरणे वनान्तरे किशोरलोकं क्षिदिरं दृशाकुलम् अदूरदोऽयं प्राज्ञद्विजान् प्रति व्यसर्जयोधि दिव्यासनादया कदेष्वदो देष्वभिधाय देभितान् कुमारकेष्वोदनियासिषि प्रभो श्रुतिस्थिराभ्याभिनिन्द्रयुच्छ्रितं किञ्च दूच्छद महीसुरोत्तमः अनादरात् किन्नदियो हि बालः समाययुक्तिमिदं ह्यवज्जुषा शिरादभक्ता खलु दे महीसुरा कथं हि भक्तं दैदै समर्पिते निवेद्य यत्नं गृहिणी जनाय मा दिशेयुरन्दं करुणाकुलायुमा इति स्मरात्तं भवदेरिदा कदा तेदारगातारजनं ययासिरे गृहीतनाम्नि द्वैसम्प्रमाकुला चतुर्विधं भोज्यरसं प्रहाक्यता शिरं त्रिदत्वप्रवलोकनाग्रह स्वगैरिनिन्द्र अभिदूर्णमाययु पिलोलपिञ्जं स गिरोस्कोपलोह्यो समुल्लसत्कुण्डलमार्तमीक्षित निधाय बाहुं सुहृदमसिस्मिनी स्थितं भवन्तं समलोकयन्तदा ददा स काचित् वधुभागमोद्यदा गृहीतहस्ता दैदेन यज्वना तदैव सञ्चिन्त्य भवन्तमञ्जसः विवेश कैवल्यमहो कृतिन्यसो आदाय बोध्यानुगृह्यता पुनः त्वदङ्गसङ्गस्पृहयोज्जति गृहं विलोक्य यज्ञाय विसृज्जयन्मिमा सकर्तभर्तृ अभिधास्वकर्णहान् निरूप्य दोषं निजमङ्गना जने विलोक्य भक्तिं स पुनर्विचारिभिः प्रभुत्ततत्त्वैषदमाविष्टोद्विजै मरुत्पुराधीश निरुन्दिमे गतान् दशकम् 62 गोवर्धनबलि कदाचित् गोपाला विहितमहास्पम्भवा निरीक्षत्तं सौरे भगवदमुत्वं सितुमना विजानन्दत्येदा विनयमृदनन्दाधिपशुभा अरुप्स्रोगोव्याकं जनकभवदा मुत्यमहिदी पभाषे नन्दास्वं सुदनुन विधेयो मघवदो महो वर्षे वर्षे सुगैरि सवर्ष्णे पृथिवी नृणां वर्षायात्या निगलमुपजीव्यं महितले विशेषादस्माकं तृणसलजे व्याहिपसव इति श्रुत्वा वासा पितुरय भावानः सरं दिगे तन्दानस्त्यं मघवचनिदा वृष्टरिति यत् अतृष्टं जीवाना सृजत गल्गो वृष्टिः समुचिता महारण्ये वृक्षा किमवपलिमन्त्राय तददे इदं तावत् सत्यं यदिह बसवो नाकुलतनं तदा जीव्यायासौ बलिसरपत्रे समुचित श्रेयोभ्यो व्युत्कृष्टा ननु तरणिदो वोक्षिदितले तदस्तेऽप्यार्ताय इति जगदि दत्त्वां निजनन् भवत्पासं श्रुत्वा बहुमतियुक्तास्ते पशुभिः
द्विजेन्द्रन्द्रानन्दो बलिमधुरुक्तैषिधिर्भृते व्यदुप्रातिक्षिण्या स्फुरसमनमन्नादरयुधा त्वमादच्चैलात्मा बलिमखिलमाबीरपुरत अवोच्चैवं धानान् किमह विदितं मे निगदितं किरीन्द्रो नन्वेष स्वबलमु विपुङ्क्ते स्वबभुषा अयं गोत्रो गोत्र द्विषसहुवितो रक्षितुमलं समस्तानि युक्त्वा जहृषरिकिल गोकुलजुषा परिप्रीता यादा खलु भवतु भेदा वृजर्षो वृजं यावद्धावन् निजमगविपङ्गं निशमयन् भवन्तं जानानाम् अधिकरजसा क्रान्तहृदयो न सेहे देवेन्द्र तदुपरि सदा मोनधरिपि मनुष्यत्वं यादो मधुपिदभिदेवेष्मविनयं विदत्ते से नष्ट त्रिदशदशा गोपीमहिता महिमा तजत्वं शिष्येस्य पशुबहद कस्य श्रियमिति प्रवर्तस्त्वां जेतुं सकलमिगव दुर्मदनिधि तदा वासं हन्तुं प्रलयजलदा नाम परभुवि प्रहण्वन् बिभ्राण कुलसमयमात् भोगमितिः प्रदस्ते नैरान्ध्र दहनमरुदात्यैर्विहसदो भवन्मायानैव त्रिभुवनपते मोहयधिकं सुरेन्द्रे कृद्धाच्चेत् विजकरुणया शैलकृपया अनादङ्गोऽस्माकं नियतविधिविश्वास्य पशुभान् अहो किन्नायादो किरिबदिधि सञ्जन्त्यनिवसन् मरुत्केहादीस प्रणतमुरवैरिन्मम गदा दशकं 63 गोवर्धन उद्धारणम् तत्रुशिरे किल दक्षिणमक्षथ तनिदज्रं विददम्बकि तत्कड़ा सुषुमया भवदङ्गतुलां कदा व्रजबदो परिवारिधरस्मह्य विपुलकरमिक्ष्रै दोयरानिबदरै दिशि दिशि पशुपाना मण्डलं दण्ड्यमाने कुबदहरिगृहानन्द पाहि पाहि दिदेशा वसनमजितशृण्वन् मा बिभीतेत्यपाणि कुलैः करगोत्रो दैवतं गोत्रचात्रोर्विहितमिह रुरुन्द्या गोनुवंशं सयस्मि इति सहसिदवादी देवगोवर्धनात्रि त्रिविधमुदमुमूलो मूलदो पालदोऽप्या तदुनगिरिवरस्य प्रोतकृत्यास्य वा सिगितलमृददेश धूरदो वारिता बे परिकरमरिमिश्रा तेनुगोबानदस्ता तुबनिदददत्ता अस्तपद्मेन शैलं भवति विरदशैले पालिकाभिर्व्यवस्यै अभिविहितविलासं केलिलापादिलोले सवितमिलितदेनो रेगहस्तेनु कण्डो यदि सदि पशुबाला दोषमै छन्दसर्वे अधिमहान् किरीरेषु दुमागसे करसरोहिततं तरदेशिरं किमितमद्भुतमद्भुरिवल्नविधि तदभिलोगिभिरागितिको भगै अहदाक्षममुक्षुपडोक्रियं व्यदति बाहुरसा भवरोभयन्
इति हरिस्त्वयि भक्तविगर्हणो दिवि स सप्तगमुक्रमवर्षय असलदिव्यविदेवपदात्पदं कलशदर्भजले सगनात्करे अबहृदे मरुदां पदी त्वदभिसङ्गतिथि समुपात्रव समुबुभेयुष सर्षभरे तदा पशुपदेन कुले स विनिर्गते भुवि विभो समुभाकितभूधरा प्रमुदिदै पशुभै परिषेबषे तरणिमेव पुरा धृतवानसि क्षिदितरो धरणे तव श्रम इति नुदत्रिदैस्कमलापते गुरुपुरालय पालय मां कथा दशकं 64 गोविन्द अभिषेकः आलोक्यशैला तरुणातिरूपं प्रभावमोच्चै तव गोपलोगा विश्वेश्वरं त्वाम् अभिभित्य विश्वेः नन्दं भवज्जातकमन्वभृच्छन् गर्गोदितो निर्गदितो निजाय वर्ख्याततादेन तव प्रभाव पूर्वादिकस्त्वय्यनुराग एषः मैदिष्टदाव बहुमानभारा तदोपमानोदि तदत्वबोध सुरादिरा सह दिव्यकभ्या उपेत्य दुष्ट्वा सनष्टकर्वा स्पृष्ट्वा पदाब्जं मणिमौलिनादे स्नेहे सनूदै मां सुरभिभयोभि गोविन्दनामाङ्गितमुपत्यजिष्यन् ऐरावदोपुरत्तदिव्य गङ्गा पदोपिरेन्द्रोऽपि ससाजहक्ष जगत्त्रयेसि द्वै गोकुलेशे तदाभिषक्ते सति गोपवाढ नागेऽपि वैकुण्ठपदेऽप्यलभ्यां श्रियं प्रभेदे भवतः प्रभाव कादासितान् यमुनं प्रभाते स्नायन् पिता वारुणपूरुषेण नीदत्तमानुतमागपूरितं तां वारुणीं कारणमाद्यरूभु ससम्भ्रमं तेन जलातिबेन प्रभोजितत्वं प्रतिगृह्यतादम् उभागतत्त क्षणमात्मगेहं पिता वदच्छरितं निजेप्य हरिं विनिश्चित्य भवन्तमेधा भवत्पदालोक भवत्तवृष्णा निरीक्ष्य विष्णो परमं पदं तुराभमन्ये त्वमधिदृष्ट्या स्फुरप्राणानन्दरसप्रवाह प्रपूर्णकैवल्यमहाभयोधौ शिरं निमग्ना खलु गोवसाङ्गा द्वै बभूवन् पुनरुत्रदास्ते करपदव्रदेवं देवकुत्रावदारे परपदमनवाप्या दर्शितं भक्तिभाजा तदिह पशुभरूपे त्वं हि साक्षात् परात्मा भवनपुरनिवासिन् पाहि मामामयेभ्य दशकं 65 गोपीनां भगवत् समीप गमनं गोपीजनाय कथितं नियमावसाने मारोत्सवं तमदसादयितुं प्रवर्त सान्त्रेण सान्त्रमहसा शिशिरुकरदासे प्राभूरयो मुरलिकं यमुना वनान्दे सम्मूर्च्छनाभिरुदिते स्मरमण्डलाभि सम्मूर्च्छयन्तमखिलं भुवनान्तराल्हा त्वद्वेणुनादमुपकर्ण्य विभोकरणुस्य तां दृष्ट्वमभिषिक्तमिभो ममाहु तागे हृदज्ञुतिरात् नयप्रसागात् कान्तोपसेवनभराचरोरहास्य सर्वं विसृज्य मुरलीरमोभिदास्ते कान्तारदे समयिकान्तदेन समेधा काञ्चिन्निजङ्गपुरिभूषणमाददाना वेणुप्रणादमुपकर्ण्य कृतार्थभूषा त्वामागता ननुददैव विभूषदाप्य इदावे समारुचरुरे तव लोचनाय हारां निदम्बुविकासन तारयन्ती काञ्चिं सकण्डभुवि देव समागदात्मा हारित्वमात्मजगनस्य मुकुन्ददुप्यं व्यक्तं पभाष इव मुक्तमुगी विशेषान् कासित्कुसे पुनरसज्जितकञ्चुलीगा व्यामोहतः परवधूपिरलक्ष्यमाणा त्वायां
मयो निरवधु प्रमणादपारा राज्याभिषेकविधये कलसीतरेव काचित् गृह किल निरे तुमपारयन्त्य त्वामेव देवहृदये सुदृढं विभाव्य देहं विदूय परिच सुकुरुवमेकं त्वामाभिसन् परिममा ननु धन्यधन्या जारात्मना न परमात्मदया स्मरन्त्यो नारायो कदा परमहस्तकदिं क्षणेन त्वं तां प्रकाश परमात्मधुनं कदञ्जी सिद्धे वहन्नमृतमरममत्मवीय अभ्यागताभिरभितो व्रजसुन्दरीभिः मुक्ता समित्तात्मदन करुणाबलोगी निस्सीमकान्तिजलदे त्वमवेक्ष्यमाणो विश्वैगहृत्य हर मे भवनच्चरोगान्. दशकं 66 गोपीजन आह्यलादनम्. उभायदाना सुदृशा कुसुमायुधपाणपादविवासानाम् अभिवाञ्छितं विदातुं कृतमधिरभिदा जगादवाममिव गगनगतं मुनिनिवहं श्रावयुधं जगितकुलवधूर्मं धर्म्यं खलु देवसनं कर्मधुनोर्निर्मलस्य विश्वास्यम् आकर्ण्यते प्रदीभां पाणिमेणितृषपरं दीना मामा करुणा सिन्धो परित्यजेत्य शिरं विलेबुस्ता दासामृदितैलभितै करुणाकुलमानसो मुरारे त्वं ताभिः समं प्रवर्तो यमुनापुलिनेश कामवैरन्दुं चन्द्रकरस्यन्दलस सुन्दरयमुना तडान्दवीदीषु गोपीजननोत्तरीयै आबादितसंस्तरोऽन्यशीदस्त्वं सुमधुनरमलाभाने करसङ्गरहणैः शुम्भनोलालासैः काडालिङ्गनसङ्गैः त्वमङ्गनालोकमाकुलिः सकृशे वासोहरणदिनेय वासोहरणं प्रतिश्रुतं तासां तदभिविभोरसविविश स्वान्तानां कान्दसुप्रभामदता कन्दलितकर्मलेशं कुन्दमृदुस्मेरवक्त्रभादोजं नन्दसुदत्वां त्रिजग सुन्दरमुपगूह्य नन्दितापाला विरहेष्वङ्गारमय शृङ्गारमयच्च सङ्गमे हि तं निदारामङ्गारमय तत्र पुनः सङ्गमे विचित्रमिदं राधातुङ्गभयोदर साधु परिरम्बलोलपात्मनाम् आराधये भवन्तं भवनपुराधीश समय सकलकथान्. दशकं 67 भगवद्तिरोधाना पुनः प्रादुर्भवसः. स्फुरत्परानन्दरसात्मकेन दया समासादितभोगलीला असीममानन्दपरं प्रबन्ना महान्ममाभूर्मदमम्बुजाक्षय निलीयदेशौ मयिमय्यमायां रमापदेर्विश्वमनोभिराम इति स्म सर्वकलिदापमाना निरीक्ष गोविन्दतिराहितो भू राधापितां तावद जातकर्व अतिप्रियां गोपवधूं मुरा भवानुपादाय कथो विदूरं दया सहस्वय विहारकारी तिरोहिदेद द्वैजादताभाः समां समेद कमलाय दाक्ष वने वने त्वां परिमार्गयन्त्यो विषादमाभूर्भगवन्नभारम् आसूदः सम्भगकर्णिकारा हा मल्लिगे मालितपालवल्या किं वीक्षदो नो हृदयैकसोर इत्यादिसात्मप्रवणा विलेभो निरीक्षदोऽयं सहि पङ्कजाक्षः पुरो ममेत्याकुलमालबन्धी त्वां भावना सक्षिषु वीक्षकासी ताभासगीनाद्विगुणी सकारा
त्वादामिगास्ता यमुनातडान्ते तावानुचक्रुशिरसेष्टिदानि विचित्य भूयोऽपि तदैव माना द्वयाभियुक्तं तदृशच्चराधं ततः समं ता विभुने समन्दा तमोबधारावधिमार्गयन्त्या पुनर्विमिच्रा यमुनातडान्ते प्रसंविलोभच्च गुर्गुणास्मते। तदा व्यदा सङ्कुलमानसाना प्रजङ्गनाना करुणैकसिन्धो जगत्त्रयी मोहनमोहनात्मा त्वं प्रादुरासुरै मन्दहासी सन्दिग्धचन्द्रस्य नमात्मकान्तं त्वां वीक्षतन्यस्य सहसा तदानीं किं किं न चक्रो प्रमदादिभारा सत्त्वं कदा त्वालय मारुदेश। दशकं 68 गोपिकानां परमहालात्। तव विलोकना कृष्णा का गोपिका जना प्रथमसङ्कुला कृष्णा पङ्कजेक्षणा अमृतधारया कृष्णा सम्प्लुता इव तिमिदिदां ददु कृष्णा त्वत्परो गता तदनुकासना कृष्णा त्वत्कराम्बुजं सपदि कृष्णदी कृष्णा निर्विसङ्गितं कनभयोदरे कृष्णा सन्निधाय सा पुलगसंवृता कृष्णा तत्सुषीसरं तव विभो परा कृष्णा कोमलम्बुजं निजकलान्धरे कृष्णा पर्यवेष्टिय कलशमुत्कदं कृष्णा प्राणमारुदं प्रतिनिरन्दति कृष्णा वाहि दृशूला अभगदत्र भा कृष्णा काभिकामिनी तव मुगाम्बुजा कृष्णा भूगसर्वितं प्रकतिर्ह्यद कृष्णा भक्तरां भजे निदतदी गदा कृष्णा पूर्णकामदा विकरुणो वने कृष्णा संहिहाय माम् अभगदोऽसिका कृष्णा त्वामिह स्पृशेत् इति सरोषया कृष्णा तावदेकया सजललोचनं कृष्णा वीक्षितो भवान् इति मुदा कुलै कृष्णा वल्लभी जनै समुमुभागतो कृष्णा यामुने तडा मृदुकुशाम्बरे कृष्णा कल्पिदासने कुसृणुबासरे कृष्णा पय्यशोभता कदिविता कृपा कृष्णा केऽपि सर्वतो त्रिददयोदया कृष्णा केसि सास्रते कतिसिति तृषा कृष्णा मातृसेवभी अभिहितो कृष्णा भवान् पल्लवी जनै अयि कुमारिकै राधे नैव संयतं कठिनदा मयि राधे प्रेमकादरे मयुदुसेदसो राधे वोनुवृत्तये कृतमिदं मये राधे यूसिवान् भवान् अयि निसंयदां राधे जीववल्लभा प्रेयतमो जनो रदे नेतृसो मम तदिदरं यदां रामे रम्यमीषिण अवनु प्रेतमेत्रदेयालभे बिभा इति करां दिगं कृष्णा मोदमे दुरै ब्रजवधू जनै कृष्णा सागमारमन् कलिदगौदुगो कृष्णा रासकेलने गुरुपरिपुदे कृष्णा पाहि मां कथा। दशकं 69 रासक्रीडा केशपाशधृतपिञ्जिकाविदति सञ्चलत्मकरकुण्डलं हारजालवनमालिकाललितमङ्गराकगनसौरभं पीतशैलधृतकाञ्चिकाञ्चितमुदञ्जितं सुमणिनूपुरं रासकेळिपरिभूषितं तव हि रूपमी सकलयामके तावदेव कृतमण्डने कलितकञ्जुळीगकुशमण्डले कण्ठलोलमणिकुण्डले युवतिमण्डले तपरिमण्डले अन्तरासकलसुन्दरीयुगळमिन्दिरारमण सञ्चरन् मञ्जुळां तदनुरासकेळिमयि काञ्चनाभसमुभादता
वासुदेवदवपासमानमिह रासकेळिरस सौरभं तूरतोऽभिगलु नारदा कदितमाहलय्य कुदुकाकुलः वेषभूषणविलासपेसलविलासिनी सदसमावृता नागतो युकवतागता वियति वेगतोदसुरमण्डली वेणुनादकृतदानधानकलकानरागकदि योचना लोभनीय मृदुपादपादकृतताळमेळनमनोहरम् पाणिसङ्पणितकङ्कणं समुहुरं शिलम्बितकराम्बुजं श्रोणिबिम्बसलदम्बरं भजत रासकेळिरसडम्बरं श्रद्धया विरसितानुकानकृततारतारमधुरस्वरे नर्दने तललिताङ्गारलुलिताङ्गहारमणिभूषणे सम्मदेन कृतपुष्पवर्षमलमुन्विशन्ति विशताङ्गुलं चिन्मयीद्वयि नील्यमानमिव सम्मुमोकुसवधूकुलं स्विन्नसन्नदनुवल्लरीतिदनु कापि नाम पशु पाङ्गना कान्तमं समबलं पते स्वतमकान्तिपारमुहुळेक्षणा कासिताचलितकुन्तलालनवडीरसागरसंरभं वञ्जनेन तव सञ्जुसुम्बवुचु मञ्जुतोरुपुलकाङ्गुरम् कापि कण्डभुवि सन्निधाय न च कण्डमाकुलितकुण्डलं पुण्यपूरणिद्यन्वभावदवभूगसर्वितसमापृतम् इन्दिराविहर्तिमन्दिरं भुवनसुन्दरं गिनडनान्दरे वामवाप्य तदुरङ्गना किमनुसम्मदोन्मद दशान्दरं कानमीसभृतं क्रमेण किल वाद्यमेळनमुभारदं ब्रह्मसम्मदरसा कुला सदसि केवलं मृत् रङ्गना नाविदन्नपि स नीविकां किमपि कुन्दलीमपि स कञ्जुलिं ज्योतिषामपि कदम्बकं तिविविलम्बितं किमपरं ब्रवे मोदसीं निभुवनं विलाप्य विहृतं समाप्य तदो विभो केळिसंमृतत निर्मलाङ्गनवकर्मलेश सुभगात्मना मन्मदासहनसेदसां पशुभयोषितां सुकृतसोदिस तावदा कलितमूर्तिराददधिमारवीरपरमोत्सवान् केळिबेतपरिलोलितापिरतिलालितापिरतिलालिभिः स्वैरमीसननुसूरजापयसि चारुनाम विहृतं यतः काननेऽपि स विसारि शीतलकिशोरमारुद मनोहरे सूनसौरभमये विलेसितविलासिनी समविमोहतम् कामिनीरितिः आमिनी शिगुलकामिनीयकनिते भवान् पूर्णसम्मदरसार्णवं कमभियोह्यकम्यमनुभावयन् ब्रह्मशङ्करमुखानपीह पशुभाङ्गना सुबहु मानयन् भक्तलोलकमनीयरूपकमनीय कृष्ण परिपाहि माम् दशकं 70 सुदर्शन शापमोक्ष सङ्गसुटवत अरिष्टवतसः इदेद्वैरसाकुलं रमितवल्लभे वल्लवा कदापि पुरमम्बिका मिथुरमम्बिका गानने समेद्य भवदा समं निशिनिषेव्य दिव्योत्सवं सुगं सुष्मभृक्तुस बृजमुगत्ननागस्तधा समुन्मुखमहोत्महे रविदिहेऽपि तस्मिन् फला अमुञ्जदि भवद्भदे न्यपति पाहि पाहीति धै तदा खलु पदा भवा समुभुकम्यपस्पर्शतं पवो ससनिजाम्ननुं समुभास्त्य वैद्यादरी सुदर्शनतरप्रभो ननु सुदर्शनाख्योऽस्म्यहं मुनीन् क्वचिदपाक्तम इह ममाब्ज दुर्वाहसम् भवत्पदसमर्पणात्
त्वमलदां कदोऽस्मीद्यसौ स्वर्निजपदं ययौ व्रजदं सखो बामुथा कदापि खलु सीर्यण विहतिर्व्यश्रीजैननै जहारतनुदानुग सकिलशङ्कसूडाबला अतिद्रुतमनुक्रद तमदमुक्तनारीजनं रुरोजितशिरोमणि हलप्रदेश तस्या तथा दिनेषु सहृत्यज न्यसिसहानशीलीलबरं मनोभवमनोहरं रसितवेणुनादामृतं भवन्तममीदृशा ममृतपारणाधायिनं विचिन्त्य किमलाबलन् विरहतापिता गोपिका भोजराजपृथक्स्तवत्कची कष्टदुष्टपतिरुष्टरिष्टः निष्ठराकृतिपष्टनिनादद दिष्टदे स्म भवते बृहक्षभी चाक्वरोदजगदितहितहारी मूर्तमेषु प्रहिदिं प्रदादन पङ्क्तिमासपरुकून्यपशूनां सन्दसां निधिमवाभवन्ददं तुङ्गशृङ्गमुखभास्मविन्द्यं सङ्गरुह्यरभसादभयित्वं पत्ररूपमविदैत्यमपत्रं मर्तयन्नमदयः सुरोलघं चित्रमत्यभगवन् वृक्षादद सूस्त्रजानि वृषसस्तिरूप्यया वर्धदेशवृषसेदसि भूयात् मोदयुद्यविनिदोषि सूर्यवन् औक्षकाणि परिदाब्धबाधुरं वीक्षतामयमिहोष विभेदी इत्थमातः सि दैत्यसगोभै केहस्त्वमववाद पुरेश